प्राचा साहब से बात हुई क्या? मसरूफ है या डिले हो रही कई जगह पे? फोन नहीं उठा रहे, वो पता नहीं। अच्छा, और क्या, कोई होगा वजह? स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी। तो मैं ये चाहूंगा कि शुरुआत कीजिए तिलावत से। हम जी में कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तिलावत कुरान से शुरू करते हैं आज की। बस तो इंशाल्लाह मैं डॉक्टर अनवर से कहूँगा तिलावत कीजिए। डॉक्टर अनवर साहब से। हाँ जी जी। अनवर हुसैन साहब तिलावत कीजिए प्लीज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफज़्ल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीनुन अनि'बुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला Recording in ज़ालिका progress. मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर डॉक्टर अनवर साहब, जज़ाकल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह। सैयद साहब एजेंडा जी में सर। क्या, फर्स्ट आइटम क्या है एजेंडा में आज के? सर मैं इंट्रोडक्शन पेश करूंगा पहले, उसके बाद फिर अच्छा, हम ठीक है। लोग प्राचा ठीक है। सर का इंतजार कर रहे थे, सर अभी तक आए नहीं है, तो हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी। आप सबका इस्तकबाल है आज के इस अहम मौजू पे। जिस हमारे साथ जो हमारे आज इस डिस्टिंग्विश स्पीकर है, वो मोहतरम मोहम्मद शफीकुज़्ज़मा साहब है। आप IAS रिटायर्ड ऑफिसर हैं, आंध्रा कैडर के। आपने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभाई है आंध्र प्रदेश स्टेट अनडिवाइडेड गवर्नमेंट में। आप जो है सेक्रेटरी भी रह चुके हैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के। फिलहाल सर सोशल इनिशिएटिव फॉर लीगल रेमेडीज, इसके प्रेसिडेंट है। हैदराबाद बेस्ड एक सर का एक NGO है, और सर समाजी खिदमत में ये लगे हुए हैं। आज हम सर से सुनना चाहेंगे कि वक्फ कमिश्नरेट जो है उससे हाउ इट कैन बी द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर द वक्फ प्रॉब्लम्स ऑल द चैलेंजेस। तो आपकी इजाजत से सर हम सर को जज़ाकल्लाह सैयद साहब। आज के मेहमान खुसूसी और मेन कंट्रीब्यूटर फॉर टुडेज फंक्शन इंशाल्लाह। तो हम दावत देते हैं कि वो आइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है। व्हाट डू यू सर? यस सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। वालेकुम सलाम। आज हम लोग वक्फ कमिश्नरेट के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। ये वक्फ कमिश्नरेट का मसला दोबारा इसलिए उठा है, ये बिल जो है 1997 में तैयार किया गया था। महबूब खान साहब मिनिस्टर थे माइनॉरिटी वेलफेयर के, और मैं सेक्रेटरी था। उस टाइम में तैयार किया गया था, काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व करके तैयार किया गया था, जिसमें लॉ डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी थे प्रोफेसर अहमदुल्ला खान साहब, जो वक्फ के मामले में बहुत ज़्यादा जानकार हैं, वो भी थे, और एक हसनुद्दीन अहमद साहब रिटायर्ड IAS अफसर थे, वो भी थे। ये जो मसला जो उठ रहा है अभी, वो इस कंटेक्स्ट में उठ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नया बिल लाना चाह रही है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जिसमें प्रेजेंट वक्फ बोर्ड की पूरी शक्ल सूरत को, पूरी नोयत को बदलना चाह रही है, और ऑलमोस्ट इसको एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाना चाह रहा है विथ नो प्रोटेक्शन। तो ये हम लोग मतलब उस जमाने में 1995 में जब नया एक्ट आया था, तो उस वक्त ये बात काफ़ी जो है चर्चा में थी कि भाई वक्फ में ये जो वक्फ एक्ट 1995 आया है, दिस मे नॉट सर्व द पर्पस, बिकॉज we wanted an act which has lot of executive powers, which government was refusing to give to the Waqf board. Government Waqf board इसलिए नहीं दे रही थी कि Waqf board is not managed by officials, it is managed by
इलेक्टेड बॉडी और नॉमिनेटेड बॉडी वाट एवर इट इज, इसलिए एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं दे रहे थे। तो उस जमाने में मिनिस्टर साहब का ख्याल था और हम लोगों ने कोशिश ये किया कि हिंदू एंडोमेंट की तरफ से वक्फ का एक कमिश्नरेट होना चाहिए। आज हम लोग उस बैकग्राउंड बात कर रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सामने आ गई है कि हिंदू एंडोमेंट कमिश्नरेट जो कहता हो रहा है विद लॉट ऑफ पावर्स एंड गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड में तब्दीली लाना चाह रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल के थ्रू टू मेक द वक्फ बोर्ड टोटली इनइफेक्टिव। तो पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि किस कंटेक्स्ट में लाया गया था। एक जनरल इंप्रेशन उस जमाने में भी ये था कि वक्फ बोर्ड एंड व्हिच इज ट्रू टुडे आल्सो दैट वक्फ बोर्ड हैज फेल्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ। और वो बात बिल्कुल वाज़ेह है, इसलिए कि जिस तरह से इंक्रोचमेंट हुए हैं, जिस तरह वक्फ बोर्ड के पास रिकॉर्ड्स नहीं है, जिस तरह पे वक्फ बोर्ड में सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इतनी बात तो तय है कि वक्फ बोर्ड अपने जो है मैंडेट को पूरा करने में नाकाम रहा है। उसकी बहुत सारी वजह है, मैं उन वजहों में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि वक्फ बोर्ड एक इलेक्टेड बॉडी था जिसमें चेयरमैन जो है वो तमाम मेंबरों के रहमो करम पे था। वो अनलेस हर मेंबर को खुश रखता वो चेयरमैन सर्वाइव नहीं कर सकता था। इसलिए हर मेंबर को वो खुश रखने के लिए उसको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते थे। तो ये बेसिक बैकग्राउंड था जिसमें ये ख्याल किया गया कि वक्त कमिश्नरेट होना चाहिए दो वजहों से। एक तो ये कि कमिश्नरेट विल बी नॉट बी अंडर प्रेशर ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट कमिश्नर। दूसरी ये है कि कमिश्नर जो है हजार भी करप्ट होगा, क्योंकि वो अपने अर्ली स्टेज ऑफ करियर में होगा, तो इतना करप्ट तो नहीं होगा कि वो अपने करियर को तबाह करते वक्त प्रॉपर्टी वक्त के मामले में अपने प्रॉपर्टी बनाने के लिए या अपनी दौलत कमाने। तो even if he is corrupt, he will not be corrupt to the extent that he undermines the whole of administration। ये बैकग्राउंड था जिसमें एक्ट बनाया गया था। अब उस एक्ट में दो तीन चीजें जो है खुसूसी तौर पे जो है ये थी कि वो वक्फ कमिश्नरेट उसी लाइन पे हो जैसे हिंदू एंडोमेंट कमिश्नरेट है। उसमें तमाम जो है पूरा स्टेट जो है मुख्तलिफ रीजन में बांट दिया जाए और वो रीजन के अंडर में डिस्ट्रिक्ट हों और डिस्ट्रिक्ट में भी सब डिविजन हों। और जैसे हिंदू एंडोमेंट में कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, एडिशनल कमिश्नर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर होता है, उसी तरह से हमारे यहाँ भी जो है वक्त कमिश्नर हो, रीजनल कमिश्नर हो, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर हो, ताकि वक्त का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्हीं लाइन खतूत पे चल सके जो कि हिंदू एंडोमेंट जिन पे चल रहा है। और जो एम्प्लॉयज भी जो हों वो उसी तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों। हालांकि अभी भी वक्त एम्प्लॉयज पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन वो उसी तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं हों जिस तरह के हिंदू एंडोमेंट के एम्प्लॉय हों। तो उसके लिए जो है हिंदू एंडोमेंट के कंसेप्ट में और वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि उनके यहाँ टेम्पल्स में कस्टम यूजेज किस तरह पूजा हो, क्या हो, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके लिए काफ़ी प्रोविजन है वहाँ पे, जबकि वक्त में जो है मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियरीज इंपॉर्टेंट है, मंशा वक्त इंपॉर्टेंट है, किसको जाना चाहिए, वक्त का जो यूज़ुफ्रक्ट है किसको जाना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। इस लिहाज से जो है काफ़ी हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर को नज़र में रख करके, वक्त एक्ट 1995 को नज़र में रख करके और जो है हालात और मामला थे उनको नज़र में रख करके ये एक्ट बनाया गया, ये बिल बनाया गया। ये बिल जो है बशीरुद्दीन बाबू खान साहब उस जमाने में जो है चाह रहे थे कि इसको पास करा दें कैबिनेट से। तो मैंने उसको कहा कि नहीं साहब पास मत कराइए कैबिनेट से, लेट इट बी पुट अप फॉर पब्लिक डिस्कशन। तो अल्लाह उनको मफ़रत करे उनको बशीरुद्दीन बाबू खान साहब को। उन्होंने कहा कि नहीं आपको नहीं मालूम है, पब्लिक जहाँ डिस्कोल के लिए रखा जाएगा इसको, तो देयर विल बी लॉट ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट विल बी वर्किंग अगेंस्ट क्रॉस पर्पसेस और फाइनली ये बिल पास नहीं होगा। और मैंने कहा कि नहीं फिर भी जो है पब्लिक डिस्कशन तो ज़रूरी होना चाहिए इसके ऊपर। और फाइनली वही हुआ जिसका खौफ था। इतना हंगामा किया लोगों ने कि फाइनली जो है वो गवर्नमेंट जो है ने कहा कि नहीं साहब इस बिल को जो है बर्फदान की नज़र कर दे। और फाइनली जो है आज हम उस हालत में हैं कि दोबारा उस वक्त बिल को हम लोग जो है दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ रही है। उसमें देखिए वक्त जो बिल बनाया गया उसमें दो चार खास बातें थी, बाकी तो वही सब प्रोविजन जो हिंदू एंडोमेंट में है, लेकिन दो चार खास बातें थी उसमें जो कि हिंदू एंडोमेंट में भी नहीं थी। उसमें एक तो ये प्रोविजन था कि वक्फ कमिश्नर के ऊपर एक वक्फ बोर्ड होना चाहिए
और वक्फ बोर्ड जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड नहीं होना चाहिए, एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए। उसके अंदर ये बड़े जो है ये थे कि क्यों होना चाहिए। हुआ ये था कि कुछ मरतबा जब स्पेशल ऑफिसर थे तो उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से काफी पब्लिक में जो है ये पैदा हुआ कि साहब ये जो है मुसलमान शरीयत के खिलाफ है, फला है, ये है वो। तो ऐसी सूरत में जब यहाँ पे जनरल एक क्या बोलते हैं ये अपोजिशन पैदा हो जाए तो ऐसी सूरत में क्या करना है। तो हम ये प्रपोजल रखा गया कि एक वक्फ बोर्ड होना चाहिए जो कि एडवाइजरी नेचर हो, लेकिन वो बोर्ड जो है वक्फ कमिश्नर के ऑर्डर को एनल करने का इख्तियार हो उनको, जिसके लिए रखा गया कि 3/4 की मेजोरिटी से वक्फ बोर्ड कैन एनल एनी ऑर्डर ऑफ द वक्फ कमिश्नर। और 15 दिन के अंदर वक्फ बोर्ड को ये डिसीजन लेना होगा कि जो ऑर्डर है कमिश्नर का वेदर इट इज इन प्रॉपर है या नहीं है, और अगर प्रॉपर नहीं है तो इसको एनल करना है या नहीं है। तो द मोमेंट पब्लिक protest or public annoyance or public opposition starts, the Waqf board shall inform the commissioner that we intend to review this order. So please don't implement it for 15 days. So the order will be stayed for 15 days, and after 15 days, board can annul the decision with 3/4 majority. अब ये है कि board will consist of how many people, what type of people, who will form the board. तो अभी जो इंतजाम है, अभी जो आपके वक्फ एक्ट 1995 का जो पैटर्न है वो ये है कि उसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर्स हैं और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। एंड इलेक्टेड मेंबर शैल ऑलवेज बी मोर देन द नॉमिनेटेड मेंबर। ऑफ कोर्स वक्फ बिल 2024 में they want to finish off that also, it has to be totally 100% nominated. नॉमिनेटेड बोर्ड में प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट अपने लोगों को नॉमिनेट करेगी, ऐसे लोगों को नॉमिनेट करेगी जो उनकी मद्दाही करें, जो उनके फेवर की बात करें, और जनरल दे मे कॉम्प्रोमाइज द जनरल मुस्लिम इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट ऑफ द वक्फ बेनिफिशियरीज। तो इसलिए जो है इसमें काफी इलेबोरेट सिस्टम बनाया गया कि हमारे पास 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें 11 जो है 11 कैटेगरीज 11 कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स होने चाहिए। तो हर जिले से कलेक्टर विल नॉमिनेट 3 मुतवल्ली। किनको नॉमिनेट करेगा? कलेक्टर को कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा नॉमिनेट करने में। 3 मुतवल्ली हु आर हैविंग हाईएस्ट वक्फ इनकम। उसमें तो कलेक्टर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है ना, इट इज नॉमिनेशन बट स्टिल विदाउट डिस्क्रिप्शन। सिमिलरली 3 पेश इमाम ऑफ लीडिंग मॉस्क फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट। तो 3 पेश इमाम ऑफ लीडिंग मॉस्क जो है, जो बड़े बड़े मसाजिद हैं, उनमें भी कलेक्टर का कोई खास डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। देन 3 लीडिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 3 लीडिंग डॉक्टर्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। उसी तरह 3 सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, 3 सीनियर मोस्ट इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, 3 leading industrialists, businessmen as reflected by income tax payment from each district. Then 3 senior most advocates from each district. Then 3 prominent Islamic theologians from each district. 3 senior most bank employees from each district. 3 representatives of prominent Muslim organizations from each district. तो इसमें जो है, though it is nomination, but there is not lot of discretion available. 3 senior most advocates, 3 senior most employees, discretion कुछ भी नहीं है। 3 हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर बिजनेसमैन, उसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो ये जो 23 जिलों में 3 आदमी एक कैटेगरी में, दे विल फॉर्म 69 पीपल। देयर विल बी इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ 69 पीपल इन ईच ऑफ दीज कैटेगरीज। और ये 69 पीपल एक आदमी को इलेक्ट करेंगे फ्रॉम ईच कैटेगरी। मतलब 69 डॉक्टर्स विल ऑफ 23 डिस्ट्रिक्ट विल इलेक्ट 1 डॉक्टर, 69 एडवोकेट्स ऑफ 23 डिस्ट्रिक्ट विल इलेक्ट 1 एडवोकेट, 69 हाईएस्ट टैक्स पेयर विल इलेक्ट 1 हाईएस्ट टैक्स पेयर अमंग देमसेल्व्स। तो इस तरह से इट वाज an elected advisory board. At the same time it was nominated, at the same time it was elected also, and it was hoped that with these type of precautions government will not be interfered too much in its composition and its formation. और इनका काम ये था कि ये एग्जीक्यूशन इनका कोई काम नहीं होगा, इनका काम सिर्फ ये होगा कि दे विल ओवरसी द फंक्शंस ऑफ द कमिश्नर, और जहाँ पे जरूरत पड़े दे विल इंटरवीन, बट दे कैन annul the decision of commissioner only by 3/4 majority.
not by simple majority and all that. तो ये जो है, this was the general protection framework of the commissioner and of the Waqf board. Then we also make there was a lot of demand, and there has been always a demand, and there has always been the heartburning that Waqf board doesn't have executive power to remove encroachment, whereas commissioner endowment or even assistant commissioner endowment have power to remove the encroachment. They themselves can remove the encroachment. Whereas in case of Waqf board, they have to refer it to, they have to pass an order, then they have to refer it to the Waqf tribunal, get the confirmation of Waqf tribunal about that order, and finally, then they have to refer to the sub-divisional magistrate for execution. Even with these three levels, they finally also they don't have the power to execute. They have to only refer it to SDM for execution. This was causing a lot of problem, and obviously, most of the orders passed by the Waqf board, they were not getting implemented as far as execution is concerned, and encroachment of Waqf board properties is concerned. So Waqf board properties are continuing to be encroached, and there was no remedy. So this act provided the same power what were available to the Hindu Endowment Commissioner to be made available to the Waqf board. We also made a provision. This is a special provision which is not available in even Hindu Endowment Board. That the commissioner will also have power to fix the rent, fair rent of Waqf properties after due notice and following due process of law. This provision is not available in Hindu Endowment Commissioner. They showed lot of interest to import that provision in their act also. But finally, our bill itself did not come through. So it did not, those powers were not imported by the Hindu Endowment also. Then we put all the protections and all the powers and all the facilities which are available to the Hindu Endowment Commissionerate to be available to the Waqf Commissionerate. So this was the basic framework, and this was the basic background. Now, the issue is that had it been passed, government could not have discriminated between Hindu Endowment Commissioner and Waqf Commissioner, because both on the same footing, both belong to the same category of officials. So perhaps situation could have been better, which is today which is putting us in a quagmire, and we are now struggling against the proposed amendment, Waqf amendment. So Waqf Commissioner is still, of course, now a lot of water has flown down the Ganges or Musa River, but still this is still relevant. Of course, it will require a lot of amendment now, because a lot of things which should have been included or which requires to be included in present context must be included, because the Waqf Amendment Bill has exposed lot of cracks in our own system, and it is essential that we also take care of those things so that those criticisms are taken care of. And for example, preparation of a proper database and things like that. So it requires some amendment, some improvement, some rectification, but I think the concept still remains relevant and require the need of the present situation. So this is background, this is the thing. If any questions are there, I will be too happy to answer. Jazakallah Shafiq bhai, really appreciate for the background. आपने बेहतरीन तरीके से इसको हाईलाइट किया है, ये इशू को. कई चीजें हैं जो I will also ask, but I will like to put it to the floor. अगर किसी को शफीक भाई से सवाल करने तो please be free, अपना हाथ ऊंचा कीजिए, then I can call you one by one. जी, anyone wants to ask? और महमूद भाई आए क्या? अपने सैयद साहब महमूद पिराचा साहब आए क्या? नहीं महमूद पिराचा साहब नहीं आए अभी तक. नहीं अभी तक नहीं. ओके, कोई नहीं. So please, अच्छा, अनवर हुसैन साहब, please feel free. Syed Anwar साहब, please switch on my video. अच्छा, वीडियो ऑफ है आपका, ठीक है. ठीक है.
मैं तो सर हाथ नहीं उठा सकता हूँ उसमें, मेरे को हाथ उठाने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है ओके। सर, बोलिए। यस। हाँ, मैं कंटिन्यू। हाँ जी बिल्कुल। As first of all, Assalamu alaikum, Shafiqul Zaman Sahab. For the first time, I heard you and I have seen your personality. Alhamdulillah, I was very fond of you, and I am still very fond of you. And I heard a lot about you. And now also I have heard in very much detail. I just would like to add, since we have formatted a sequence of form for the 29 states and comprising of 800 districts. 23 As districts. 800 districts of the country. नहीं, Also, 23 I'm talking. 23 districts of Andhra Pradesh. It was the board No, was yes, but I'm just proposing from my side. अनवर सर, 800 districts of the country. सर अनवर सर जो है वो ही इज प्रपोजिंग हिज ओन प्रोपोजिशन। आपने 23 डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के लिए किए, आंध्रा के लिए। वो पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया में 800 डिस्ट्रिक्ट के लिए हम इसको प्रपोज करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं? हाँ, तो मैं आई कंटिन्यू शफीकुल जमा साहब? kindly welcome. हाँ, तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द 29 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज and 800 districts of the country, because this act and the bill is for the whole nation. This will be considered as a national bill. तो इसमें हम लोग जो है ये पूरे इसकी बात करते हैं। तो जैसा जो आपने स्ट्रक्चर जो बताया है ना, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर में हम लोग ये चाह रहे थे कि मस्जिदों से लेकर के जो औकाफ है, मस्जिदों से लेकर के और जो औकाफ के जो मेंबर्स है, हम लोग उनको मेंबर्स को जोड़ करके और उनकी जनरल बॉडी क्रिएट करके, सपोज अगर आपके हैदराबाद में अगर एक डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट अगर समझिए 40 मस्जिदें हैं छोटी मोटी सब मिला करके, और एक जामा मस्जिद होंगी, तो वो 40 आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज आ रही है? फिर से बोलिएगा डॉक्टर अनवर, फिर से बोलिएगा। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल नाउ। हाँ, अभी बोलिएगा, जस्ट रिपीट। हाँ, तो हम ये चाह रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट से लेकर के वो आकर के एक सेंटर में आ जाए और वो सेंटर से उठ करके पूरे स्टेट में आ जाए। तो ये जो आपका जो स्ट्रक्चर आपने जो अल्हम्दुलिल्लाह जो 69 प्रोफेशनल्स का जो थोड़ा हेलो थोड़ा सा रिपीट करिए, आपकी आवाज चली गई थी। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग जैसे जो लोकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो मस्जिदों के जुड़ करके, डिस्ट्रिक्ट मस्जिद से जुड़ करके वो स्टेट की एक सेंट्रल कमेटी में जुड़े। और ये जो आपने 69 कह रहे हैं, ये 69 को हम लोग इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 800 से, तो ये पूरा हमारा एक नेशनल भी हमारा एक स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो हम लोगों का लोकल वक्फ बोर्ड और CWC दोनों का ये स्ट्रक्चराइजेशन हो सकता है। ये प्रोपोजिशन है आपकी तरफ से डॉक्टर अनवर से। और दूसरी चीज ये होगी कि इसमें ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल शुरा तरीका है जो आपने जो ये बताया 69, दिस इज अ कंप्लीटली बेस्ड ऑन दी शरिया, शुरा जिसे कहते हैं, ये शुरा की शक्ल में हो जाएगा। तो इससे क्या है कि एक आम आदमी जो बेनिफिशियरी है, आज तक के बेनिफिशियरी को डील से या एक्ट से जुदा रखा गया था। तो ये स्ट्रक्चर में अगर हम लोग पूरा नेशनल स्ट्रक्चर इसी सिनारियो में लाते हैं, तो एक आम आदमी की आवाज वो एक गली से उठ करके दिल्ली तक के जा सकती है। और दिस विल बी यानी कंसीडर्ड अवामन नास को स्टेक होल्डर बनाने की बात है। एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली। बहुत अच्छे, बहुत। कैरी ऑन। Can I intervene? हाँ, शफीकुल जमान बोले। इसमें प्रॉब्लम है क्या है कि ये वक्फ जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है। वक्फ मैटर जो है कंकरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इसमें हुकूमत
मरकजी हुकूमत को भी अख्तियार है कानून बनाने का और स्टेट गवर्नमेंट को भी अख्तियार है कानून बनाने का विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब उसमें क्या है कि ऑल इंडिया अगर कोई कानून बनाना है तो वो सिर्फ मरकजी हुकूमत बना सकती है, लेकिन स्टेट की सतह पे हर स्टेट भी अपना कानून बना सकती है विद द कॉन्फ्रेंस ऑफ कोर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हर स्टेट अपना कानून बना सकती है, इसलिए स्टेट वाइज कानून बनाने हम लोगों ने सब ये सोचा है कि स्टेट वाइज कानून बनाना ज्यादा आसान होगा, इसलिए तो जो वहाँ की हुकूमत है उसको उसके ऊपर अंदाज हो करके खास करके मिनिस्टर साहब खुद ही इंटरेस्टेड थे, तो वी थॉट दैट इट विल बी मोर यूजफुल। Certainly, all India it is much better. लेकिन whether it is practicable or not, whether government of India will like to हाँ, intervene. लेकिन इसकी एक सूरत निकल सकती है शफीक जमान साहब कि अगर हम स्टेट लेवल पे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज करते हैं तो सीधा एक एक स्टेट को लाइन में लाके फिर वो जैसा डॉक्टर अनवर कह रहे हैं कि उसको हम सेंट्रलाइज बॉडी बना सकते हैं आगे जाके। बिल्कुल हाँ, ठीक है ना। Politically, डॉक्टर Dr. Saab, politically it will be very difficult to go through the states as per the today's scenario. हेलो, हाँ जी कैरी ऑन सुन रहे। आज के सिनेरियो में जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट ने इसको अपने नाक पर बिठा रखा है, तो हमारे लिए स्टेट वाइज जाना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। वी विल हैव टू स्ट्रक्चराइज द complete proposition what we are talking on the subject today has to be under the national scenario. That is what I feel. ठीक सर, अनवर साहब ने अपना प्रपोजल सबमिट किया अभी और हम बात करते हैं। सर, इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हिंदू इंडोमेंट एंड योर प्रपोज इंडोमेंट? शफीक हुसैन, Can you repeat it? What is the हिंदू इंडोमेंट में और आपका जो प्रपोजिशन है उसमें क्या फर्क है? नहीं, जैसा मैं बताया हिंदू इंडोमेंट के अंदर उनके यहाँ जो है पूजा पाठ रिचुअल उसके ऊपर बहुत जोर है, तो उसके काफी पोर्शन उनका जो है वो उसके बारे में है स्पेसिफिक, जिसकी हमको जरूरत नहीं है। इसलिए कि हमारा जो वक्फ है वो बेसिकली मंशाए वक्फ को मुनहसर है। जो मंशाए वक्फ है उसके हिसाब से आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना। उनके यहाँ रिचुअल थी, इसलिए उनके यहाँ बहुत सारे जो है पूरा हिंदू इंडोमेंट एक्ट होता है, एक मेजर पोर्शन जो है उन चीज़ों को एक्सरसाइज करता है जहाँ जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उनका जो है वो जैसे मैं पहले बताया कि उनके यहाँ जो प्रोविजन इविक्शन का है, लेकिन फिक्सेशन ऑफ रेंट का उनके यहाँ प्रोविजन नहीं है। कमिश्नर को अख्तियार नहीं है, ही हैज टू गो टू द सिविल कोर्ट फॉर गेटिंग द रेंट फिक्स, रेंट कंट्रोलर के पास। So we wanted to give that power of the rent controller as far as waqf properties are concerned to the waqf commissioner. तो ये बुनियादी फर्क है। और उसके अलावा जो छोटे फर्क हैं वो जो है रिचुअल्स के बारे में, इनके बारे में कैसे पेमेंट होगा, जकात को कैसे पेमेंट होगा, उनको कैसे पेमेंट होगा, जिसकी हमारे यहाँ शायद उतनी जरूरत नहीं। सर, जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर भी सेम ही है ना? मतलब उसके बाद में ट्राइब्यूनल के बाद में हाई कोर्ट बाद सुप्रीम कोर्ट। हाँ, लेकिन उनके एडवाइजरी बोर्ड भी नहीं है who can annul the orders of the commissioner। जो बुनियादी फर्क है, हमारे यहाँ एक एडवाइजरी बोर्ड जो है वक्फ बोर्ड का की शक्ल में who can annul the decision of the collector, that is a great check on the power of the waqf commissioner। Power is not available in Hindu endowment। उनके यहाँ हिंदू एंडोमेंट कमीशन के ऊपर कोई चेक नहीं है, एक्सेप्टिंग जो उनका अपना उसका जो अपना शताब्दी दो उसके हिसाब से जो चेक है, बाकी कोई ऑफिशियल कोई स्टैट्यूटरी चेक नहीं है। तो वी वांटेड टू प्रोवाइड दैट चेक। वक्फ कमिश्नर शुड नॉट डू समथिंग व्हिच इज टोटली एब्सोल्युटली अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो उसके लिए कुछ पावर होना चाहिए, तो वो पावर बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है और बहुत ही डिफिकल्ट है। 3/4 मेजोरिटी से किसी को एनल करना थोड़ा बहुत मुश्किल है। तो दैट इज द डिफरेंस कि उनके यहाँ ये वक्फ बोर्ड की एडवाइजरी जो एनल कर सके कमिश्नर कोई प्रोविजन नहीं है। उनके यहाँ रेंट कंट्रोलर, कमिश्नर इज नॉट अ रेंट कंट्रोलर, वो प्रोविजन नहीं है। फिर उनके यहाँ जो है वो उनके यहाँ जो जोर है वो जकात पर क्या पेमेंट होना, कैसे पेमेंट होता है, पूजा कैसे होना, वो हमारे यहाँ नहीं है। तो ये सब सम बेसिक डिफरेंसेस आर देयर, बट बाय एंड लार्ज द स्ट्रक्चर इज द सेम। जज़ाकल्लाह। और सर, किसी जो को लीगल रेमेडी सर जो है वो ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वो सेम है?
देखिए, ट्राइब्यूनल के बारे में बेसिक कंफ्यूजन है। ट्राइब्यूनल इज बेसिकली इन नेचर ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल प्रोसीड्यूर कोड के सेक्शन 9 के तहत एनी डिस्प्यूट कैन बी adjudicated by a civil court excepting those which are specifically barred by law। तो ट्रिब्यूनल क्या करता है कि स्पेशल केसेस में, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, तो इनकम टैक्स के मैटर में द जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज बार्ड एंड दैट फंक्शन इज गिवन टू द ट्रिब्यूनल। उसी तरह वक्फ मैटर्स में द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट आर बार्ड, जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इज बार्ड एंड दोस पावर्स आर गिवन टू द वक्फ ट्रिब्यूनल। सिमिलरली हिंदू इंडोमेंट एक्ट के तहत हिंदू इंडोमेंट ट्रिब्यूनल को जो पावर्स हैं एडजुडिकेट करने का, दे बार द जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। So basically it is in nature of civil court, its hierarchy is the same: tribunal, high court and supreme court, civil court, high court and supreme court. So it is basically in nature of civil court, isn't it? सर हिंदू इंडोमेंट में भी ट्राइब्यूनल्स है? बिल्कुल है। हमारे यहाँ तो सर हमारी जो मेन मीडिया है और जो हमारा जो नैरेटिव्स है, जो राइट विंग ने जो फैला के रखा है कि ट्राइब्यूनल सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास है। नहीं, उनके यहाँ भी स्पेशल पावर दिए है। उनके यहाँ भी सेक्शन 163, आई रिमेम्बर करेक्टली, सेक्शन 163 में, अगर मुझे याद है पक्का से, सेक्शन मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 163 ऑफ हिंदू इंडोमेंट एक्ट टाइप करिए। I think this tribunal is definitely there. Which section is there, I will not be able to recall immediately. But there is 100% tribunal in Hindu endowments also. यहाँ तो सर फॉल्स नैरेटिव फैलाया गया है कि सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास ट्रिब्यूनल है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। स्पेशल पावर दिए गए वक्फ बोर्ड को। नहीं, फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया। सारा जो है, this has been brought on the basis of false narrative only, and to pander to the false narrative, to legitimize the false narrative only। हिंदू इंडोमेंट्स के पास, देखिए, हिंदू इंडोमेंट्स के पास जो है आपके ट्रिब्यूनल है। हिंदू इंडोमेंट प्रॉपर्टीज आर आल्सो protected from limitation act. It is not only for waqf property, limitation act वहां भी अप्लाई नहीं होता है। They also have overriding effect on all the acts। ये सब जो नैरेटिव फैलाया गया है कि वक्फ बोर्ड ओवरराइडिंग, वक्फ एक्ट हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट, हिंदू इंडोमेंट एक्ट आल्सो हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट, वक्फ बोर्ड हैज प्रोटेक्शन फ्रॉम लिमिटेशन, हिंदू इंडोमेंट आल्सो हैज प्रोटेक्शन फ्रॉम लिमिटेशन। This वक्फ बोर्ड doesn't have a tribunal। Hindu endowments, वक्फ बोर्ड only has tribunal, Hindu endowment also has tribunal। और एक और बहुत बड़ा फॉल्स नैरेटिव जो फैलाया गया है वो ये है कि वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए सर्वे कमिश्नर है। 156 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल। मैंने 160 में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वो। जस्ट एक मिनट, नहीं क्या है वो, मैं तो है नहीं 156, section 156। 1 minute, there shall be a tribunal होना चाहिए। 160 का नंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल है। तो क्या कहते हैं, कहाँ पे था मैं, तो ये नैरेटिव है। दूसरा नैरेटिव एक ये है कि सर्वे कमिश्नर है वक्फ के पास, हिंदू इंडोमेंट में कोई सर्वे कमिश्नर नहीं। People forget that सर्वे कमिश्नर इज a level of further level of scrutiny for the वक्फ। सर्वे कमिश्नर में बहुत खुश होने की कोई चीज नहीं है। सर्वे कमिश्नर इज नो प्रिविलेज। वी विल बी हैप्पी that if सर्वे कमिश्नर इज abolished। हिंदू इंडोमेंट में क्या है कि कोई अगर आदमी अप्लाई करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, इंडोमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कमिश्नर ऑफ ड्यू इंक्वायरी इंडोमेंट रजिस्टर कर देता है, एंड एनीबडी हु इज एग्रीड ही हैज टू गो टू द ट्रिब्यूनल। यहाँ पे क्या है कि वक्फ बोर्ड के पास अगर कोई आदमी अप्लाई करता है तो आफ्टर फॉलोइंग द स्टैट्यूटरी प्रोसीड्योर इन द वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड जो है उसको जो है नोटिफाई कर देते हैं। देन इट हैज टू बी सर्वेड बाय सर्वे कमिश्नर हु अगेन होल्ड्स अनदर लेवल ऑफ इंक्वायरी ऑन द फील्ड। वहां जाके फिर इंक्वायरी करता है, लोगों से पूछता है, ये करता है, वो करता है, देन ओनली ही एग्रीज टू दैट नोटिफिकेशन। तो वक्फ कमिश्नरेट इज अनदर लेवल ऑफ स्क्रूटनी एंड कंट्रोल। Waqf commissioner, survey commissioner is another level of scrutiny and control. It is not, if it is not in Hindu Endowment Act, please remove it from the Waqf Act also. There is no problem about that.
Survey commissioner is not a privilege. It is basically a control. It is a level of scrutiny. It is another level of scrutiny for us. So the Hindu environment is at least free from that scrutiny. Straight from the commissioner to the tribunal. Here from commissioner to the survey commissioner, from the Waqf board to the survey commissioner, from the survey commissioner to the tribunal. So yes, some narratives, the narratives are not correct. अच्छा, ये नेगेटिव नैरेटिव्स फैला के ये लोग बात जो आगे करे, कैन वी नॉट गेट द पैरिटी के जो भी है 162 is the constitution of endowment tribunal. तो वो हम पैरिटी नहीं करा सकते कि हिंदू इंडोमेंट और वक्फ कमिश्नर वगैरह में जो भी है रिमिट्स दे शुड बी ऑन द इक्वल पार। बिल्कुल सही है आपका, इसीलिए तो आपको वक्त कमिश्नर की जरूरत पड़ रही है ना। पैरिटी कैन बी ओनली, कंपैरिजन कैन ओनली बी अमंग इक्वल्स। जी, तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप इक्वल तो है नहीं, आपके यहाँ बोर्ड है, वहाँ कमिश्नरेट है। दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट कमिश्नरेट। अगर वक्त कमिश्नर आएगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द वक्त कमिश्नरेट विदाउट कंट्रोल इन द सेम वे without controlling the Hindu endowment commissioner. So parity can be created only when there is comparable. जी। Which is why we are talking today of Hindu Waqf commissioner, Waqf commissionerate. Any other questions to be raised by the floor, please? सर ये तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया सीधा। वहां पे जो है सर्वे कमिश्नर है, यहाँ वहां पे भी ट्राइब्यूनल है, यहाँ पे बोला ट्राइब्यूनल निकाल दो। There are lot many values. Actually, I have written an article in the Muslim Mirror. I don't know how many of you have access to that. Pandering to the false narrative. क्या false narrative create हुए हैं and how they are reflected in this our present bill. So definitely there is violation of Article 14. There is violation of Article 21. There is a violation of Article 300. There is violation of Transfer of Property Act. There is a violation of Administration of Evacuee Property Act. How many violations are there? ये आर्टिकल आपने जो लिखा है अगर ग्रुप पे शेयर कीजिएगा ताकि सभी को। Already आपने भेजा नहीं भेजा? I already sent to you. Pandering to the false narrative. सबको भेज दीजिए। So that article was published in Muslim Mirror about a month back. I have already given. I think we will communicate it to Anwar Ali sir. We can communicate. ठीक है, शुक्रिया। So this is about 10 narratives which have been false narratives which are spread, and what is our response to that? एक तो narrative यह है कि साहब जो है वक्त is holding the third largest land bank in the country after railway and defense, whereas the truth is that पूरे हिंदुस्तान में वक्त properties are estimated at about 7 lakh acres. Of course, that there is no basis for that. Such a committee report says that. Whereas in Andhra Pradesh endowment itself, there are 4.85 lakh acres of property. In Tamil Nadu, in Andhra Pradesh, it is 4.65 or 7. So these itself is more than what whole country of Waqf land in whole country. So there is a question of Waqf board having holding third largest world bank in the country. So there are many such narratives which have been created, which have been, and I think we also fall prey to that because we do not know background. असल में शफीक जमान भाई के हमें मालूमात नहीं होती and we fall to the trap. ये ट्रैप डाला जाता है। This is not exactly हाँ। और किसी को प्लीज if anyone want to contribute, let us carry on. किसी को कुछ क्वेश्चन करने? हाँ, डॉक्टर अनवर हुसैन आइएगा प्लीज। अनवर हुसैन साहब, yes, जी, am I audible? Yeah, you are audible. Yes. Very loudly. Yes. I just heard about the violation of
like when the transfer, this fundamental right of the right to hold property was deleted under the 44th Amendment, and the replacement of Article 300A was substituted, and then after in 2010 the 97th Amendment was introduced, under which the electoral formation substitution was given to the whole country to be in a single manner. If you have a membership, if in any association, society or trust, more than 300 numbers, the uniform selection or the election process should be adopted as per the Public Representation Act. And this 97th Amendment is not popularly known by the majority of our the professionals as well as the judicial platform, because I had given in 2018 to the Maharashtra Waqf Tribunal on the basis of the Waqf Standard Uniform Rules, which is called to be 2016 National Waqf Rules for Administration and Management, in which the pro forma and the appendix was also given under the same rules to be adopted by all the states. How to elect and how to administer, how to submit your the financial affairs to the Waqf Board. So what I meant to say here, if this structure, what you have given for the 69 professionals, if under the system of 97th Amendment, if we brought in relevance and reference and as an addendum to the whatever we are going to propose the alternate remedy to the government, I think so it will be helpful for us. So I would like to have your suggestion on this. Sir. These are very positive points by Dr. Anwar. I think the second part which you said, I fully agree. There can be no two opinion about that. That it can be replicated elsewhere and it can be replicated on national level. As far as the first part is concerned, this is another narrative which is created that property right is not a fundamental right. Okay, it is not a fundamental right, but it is a statutory right. It is a constitutional right, isn't it? Exactly. Exactly. So once it is constitutional right, it cannot be taken away except with the due process of law. Yes. And right to property also includes right to enjoy the property, right to dispose of my property, right to waste my property, right to throw away my property, right to protect. Not right protect. To protect. I want to throw away my property. So right to property includes that. So now the question is that once right to property has been given, right, is a constitutional right. So the person has a right to appoint a mutawalli of his own choice. You cannot say who should be appointed. As per the Transfer of Property Act, Section 129, I think Section 129, Muslims are permitted to make oral gift of the oral alienation of the immovable property. Hiba is permitted. So once that is permitted, then there is question of when he can alienate the property orally, why he cannot appoint the property orally, appoint the mutawalli orally? So this is all contradictions. If a person can dispose of his property orally, then why he cannot appoint a mutawalli orally? Mutawalli, yeah. Then so sir, here 1 minute. Here one point is missed. Yes. No, 1 minute. Let me complete it. If he can dispose of the property orally, then why he can't make a waqf orally? So this point, there are a lot of contradiction. It is yes, your point you are making. Kindly go ahead. I was talking about the 97th Amendment, which was given as a statutory guideline for the electing the association trust or the society members, or the structure of the complete management and administration of the institution. That was your second part, which I have already agreed. First part only I have an objection that it may not be constitutional, it may not be fundamental right, still it is a constitutional right. So second part, no, that's what I said. I agree with you. Or A was substituted.
Sir, how to go forward now? How to make your this? What is the way forward? That I think all of us have to decide. I cannot decide that. No, sir, we all are deciding. प्रपोजल टेबल पे रखिएगा ताकि उसको फिर अपन I was only asked to brief about the contours of the bill which was proposed in 1997 by Bashiruddin Babu Khan Sahab, late God bless him, about the Waqf Commissionerate. So that I have already told you. How to go about it is a big question. Actually, when it was brought in 1997. आपकी आवाज आ रही है? When it was brought in 1997, then lot of criticism was there against Bashiruddin Babu Khan also and against Shafiq Zaman also. That both these fellows want to destroy Waqf properties and all that, and they want the government to get all the Waqf properties to be controlled by government. So that was the reason why Bashiruddin Babu Khan and Chandrababu Naidu at that time, he was the chief minister, he backed out. No, we don't want to annoy all the Muslims and all that. But perhaps it was a little premature at that time. They didn't understand its implication. Now it has become relevant. Zaman ji, assalamu alaikum. Waalaikum Lubna. Lubna from Hyderabad. जी लुबना बेन ओके तो नहीं Zaman ji, see the main thing यहाँ पर तो एक तो what is plaguing the क्या बोलते हैं वक्फ property management is corruption, one thing that you highlighted. वीडियो ऑन कीजिए, सामने आइए. Hello. हाँ लुबना बेन आप कैरी ऑन. Yeah. तो one thing is the corruption, जो चीज अपन बात कर रहे हैं, उसकी वजह से वो उसकी couldn't realize. प्राचा सर आ रहे हैं, अभी ज्वाइन कर रहे हैं. ओके जी ओके हाँ बोलिए ना. कैन आई कंटिन्यू प्लीज? यस मैडम. ओके तो एक तो करप्शन की बात है और दूसरी चीज है उसकी मुस्तहिक को वो चीज नहीं पहुंच रहा जिसके लिए उसको जाना चाहिए था. उसकी अपलिफ्टमेंट सोशल इकोनॉमिक फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट थी वक्फ की इतनी जबरदस्त, लेकिन वो मुस्तहिक को नहीं पहुंच रहा. तो मैं क्या बता रही थी कि आप एक तो आप इफ यू कैन काइंडली शेयर द 1997 बाबू खान बिल which you and Babu Khan ji had done. So one thing we can also go through it. And second thing, how for the corruption part of it, your suggestion was that it should be commissionerate because commissionerate. So I want you to substantiate this to understand it more better. Kyunki not that I am not at all in favor ki waqf board rehna chahiye. No, I am neutral about it. Now coming to the commissionerate, I want to understand how you feel that the commissionerate will root out or it may, or at least make it very minimal of corruption, because that is the main thing that is plaguing our waqf properties management बोलिए या फिर realization to the मुस्तहिक बोलिए. That's the main thing. क्योंकि वो लोग honest नहीं है, corrupt है. तो how do you think having a commissionerate will resolve this problem? शफीकुल जमान साहब. जी मैं बात बोल रहा हूँ. देखिए रिजॉल्विंग दिस प्रॉब्लम तो ये it will minimize the problem, it will not resolve the problem. Corruption is a universal problem and we can't claim that this will obliterate the corruption. What I only told is that it was prepared in the background that the chairman of the Waqf board is always under the pressure of the vested interest because he has to survive no confidence motion. There are 11 or 13 members, so he has to survive that no confidence motion and pressure of each member. So each member can bring a pressure and he has to, so many times he has to succumb to those pressures. Whereas the commissioner will not have those pressures because he is a government employee, he will not be subject to those pressures. He doesn't have to face no confidence motion. Number one. Yeah. Well, once again, sir, let me just humbly submit here. अभी कोई भी commissioner ले लीजिए आप. Any commissioner, you know, they work under a ministry. And it's very obvious कि कोई भी ministry रहो तो the ministry is prevailing upon the commissioners. How are we actually? I'm trying to understand because you have been you are an ex-IS. I'm trying to understand. Coming to that, I am coming to that. Second point is that it is presumed that the commissioners will be in the early stage of the service. Collector is 8 years of service for IS officers.
So they will be coming not below the rank of collector. That was the provision. So and there will be the IS officers or IPS officers or judicial service officers to 8 to 10 years of service. That is almost the initial stages of the service. So they cannot be that corrupt that they will put the whole service at stake, because for chairman and Waqf board members there may not be any disciplinary rule, but there is disciplinary rule for the officers. So they are always subjected to the rules, and they will not be that corrupt, hopefully, that they will stake their whole career for the sake of this in the earlier stages of their career. That is as far as corruption is concerned. As far as succumbing to the pressures of the government is concerned, that is why we made a special rule here that the ACR, annual confidential report, or performance appraisal report, which is essential for the promotion of IS officers, for these 3-4 years, will not be written. And it will be the same ACR what was at the time of entry. If it was very good, it will remain very good for these 4 years also, 3 years also. If it was outstanding, it will remain outstanding for these 3 years also. If it was poor, then it will remain poor for these 3 years also. So that he is not under government pressure or the ministry's pressure that they will spoil his ACR. So these are the maximum protections, safeguards which we could create. If people can think of more safeguards, they are welcome. There is no. This is not this is not the ultimate wisdom. The Waqf proposed bill is definitely not the ultimate wisdom. Had it been there, it could not have been put up for public debate. The very fact that it has been put up for public debate was only because of this, that other people like you, they could contribute, that how to improve it. Yeah. So I told you the background, that these are the background, this is what we thought. And can still be some improvement. There is no opinion about that. Yeah, thank you, Zamanji. Only one thing. Do you suggest कि every state, because it's in the concurrent list, हर state ने अपनी अपनी bill बनाना चाहिए, या I mean activists ने मिलके एक bill हर state में अलग-अलग propose कर सकते हैं? Do you suggest like that, or you think? आप जो है हर स्टेट में propose नहीं कर सकते. आप propose कर सकते हैं सिर्फ अपने state के लिए. Yeah, that's what. Are you suggesting कि every state में मुस्तैक वो लोग अपनी अपनी bills propose करें? Are you suggesting that? अगर ऑल इंडिया बिल पे, जैसे कि अभी पहले बता रहे थे, वो बात कर रहे थे, कौन सा बात कर रहे थे कि ऑल इंडिया स्टेट पे जो है ये इंतजाम ऑल इंडिया लेवल पे होना चाहिए, और इंस्टेड ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ 69 पीपल, इट विल बी इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ 800 पीपल थ्रू आउट द कंट्री एंड ऑल दैट. दैट इज प्रैक्टिकेबल, नॉट दैट, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू एग्री फॉर इट. So if it is at the level of government of India, it is much better. It is for a whole country. Whatever effort you have made, that will be replicated in the whole country, and it will benefit, if it is going to benefit. I would like to now. Yeah, thank you, Zamanji. I would like to now welcome Dr. Mahmood Pracha. He is just joined. I can understand he must be very busy. So now I will ask Dr. Pracha to take over as the chair of this meeting. Dr. Mahmood Pracha, most welcome. Thank you very much, and I am sorry that I got late because I was not only busy, but press conference which was there, it got extended about the EVM, because that's an issue which is most important, because everything emanates from that. But I was hearing Dr. Shafiq. I have only one request in that which I would like to, because I did not hear him from beginning. Presumption that an IS officer will be relatively honest is fallacious to its core. I'm with greatest of respects to him, because government of India as a policy is privatizing most of its most prestigious assets, because government officials have failed in their duty to run organizations properly. The entire system of privatization is because of that. So this would be the most fallacious argument to say that a government official will be a more honest than a common person. And I am of the opinion that there have to be checks and balances. If Dr. Shafiq was able to go through because government officials are the most corrupt. They are trained to be corrupt. They are trained in Dehradun. I know Mr. Wajat Habibullah, who was director there.
he and many other friends, they tell us the first thing that is taught to a public servant in Dehradun is that you have to delay matters. You don't have to ever try to solve public's problem. You have to create problems and keep the public busy. That's the unofficial training which is given, which is reflected in every single department of our country, including defense. There is so much corruption in defense because defense ministry's officials take decisions here, and people who are fighting the war, the army officials, that's a big complaint of the army people against the bureaucrats. So trusting bureaucrats is the most dangerous thing which can happen to any organization. We can't trust bureaucrats. That is the first thing. Everything has to be mistrusted. Our system has to be such that we mistrust every person, much more every civil servant. So that has to be the basis. This is what my experience has been, and this experience has been substantiated by various Supreme Court judgments as well as various studies which have been made. So what I had proposed was that we have to be pragmatic also. See, now we should use this difficulty as an opportunity. Government wants to change this law. Now we have, what I had suggested was that there should be election of the Waqf boards and a central Waqf council. There has to be videography of the entire proceeding. That's the only guarantee that there will be no corruption. Otherwise, the history is telling us, corruption, thy name is Waqf boards. And any commissioner, you name it anything, it is going to be the same if that unchallenged power is given to anyone. Only फरिश्ते ही ऐसे होंगे. I would like to use Hindi. फरिश्ते तो इंसान हो नहीं सकते. फरिश्ते ऊपर से आ जाएंगे, वो भी शायद करप्ट हो जाए. वक्फ बोर्ड में इतनी पोटेंशियल है, तो that's what I am saying, that we have to, if you, I would request Dr. Anwar and Lumna Sahiba also to share the proposals which I have made. That should also be discussed in this meeting and any other meeting. If those, but I am just informing as an opening remark only that there are two hallmarks of my proposal. One is that there has to be an election of all the Waqf board members by Muslim community, like in terms of the Sikh Gurudwaras. Their Sikh community directly votes. Second, there should be a provision of recall, right to recall. Third, the entire proceeding of Waqf board and every other proceeding which takes place, including that of identification of the Waqf properties and all, has to be video recorded. These are my proposals, if they can be shared on the screen. Thank you very much, and I would now listen to all the proposals which are coming. Thank you very much. So I just want Pracha sir, Assalamu alaikum. I just wanted to, मेरी आवाज आ रही है इसमें? जी आ रही है, आ रही है. I wanted to make, I didn't say that IS officers are angels. What I wanted to tell was that they are in the initial stages of their career when they will be the Waqf commissioners. And in the initial stages, the likelihood is that they will not indulge into this type of correction and put their whole career at stake. That is number one. Number two, I also said that why a Waqf board is corrupt or chairmen are not able to do this thing, because they are always under pressure to survive a vote of no confidence. Once they have to survive a vote of no confidence, they are under the pressure from the various members who have vested interest to cater to their demands. They cannot just oppose, because otherwise he will not be chairman. He will fail in the vote of confidence. So in these two backgrounds, this proposal was made. Not that bureaucrats, but fortunately or unfortunately, whether we like it or not like it, country, every department is being run by them only. So if endowment is being, therefore our country is where it is. But I would like to show you another side of the picture. Now imagine a
chairperson or a person who has no one to oppose him, he will be not selling in retail, but he will sell properties in wholesale because there is nobody to question him. I agree, there will be vested interest, but whenever there is a voting system, no, there is always an internal check and balance. One corrupt person will highlight the corruption of the other because they belong to different categories. This is the system of democracy. Even parliament, do you think opposition member of parliaments are not corrupt? But the system is framed in such a manner that one corrupt person highlights the corruption of the other. If Mr. Narendra Modi is today given this carte blanche that nobody is going to question you, there will be no leader of opposition, then there will be no pressure on him. He'll sell Reserve Bank of India first thing in the morning tomorrow. This is the other side of this coin. We have to be careful. Mohammed Pracha, that is why I said that the proposed bill of 1997 by Bashiruddin Babu Khan is not the ultimate wisdom. There is always a scope for alternative proposals, and we can definitely discuss the alternative proposals also. There's nothing wrong in that. That is, there is a practical aspect. The practical aspect is we have been placed on a train which is running in the direction of an amendment to the 2013 and 1995 Act. So we have to have a pragmatic solution. So let us propose our amendments to that instead of trying to bring in a change which is not sitting in that train. Let's be pragmatic also. Now all the suggestions which you have, which will actually strengthen the protection of Waqf properties should be considered, and that should be included in the amendment. That is what my suggestion would be. Actually, we have to, so no system is perfect. It is how, even a commissioner can be very honest, but how we implement that system is most important. The system is not corrupt. It is the people who are corrupt. Every system can be worked out in a manner which will be foolproof. But it is workable. Human angle, which destroys everything. That's what. So let us control humanity. Let us put exemplary punishments, as I have kept 10 years up to life for anyone who undertakes any corruption or breaks the law. So these are the safeguards which we can have. Government officials or no government officials, not going to make a difference. In fact, a lot of people prepare and get inducted into an IS so that they can undertake corruption only. That's the trend now. That is their main thing. And they save themselves by bribing their superiors. In Delhi and in all the other places, there is a chain of command of corruption. Junior officials are placed in important positions because they can collect more and more bribes. They can do more corruption. That's a practical aspect which we see every day in courts. Bureaucrats are the most corrupt. They invent methods to corrupt the politicians. It's not the other way around. The election results are like, symbolic in this reference only. Yeah. Sir, judiciary is not exception, sir. Judiciary, see, less said the better about judiciary. So, it's worse than bureaucracy. The only thing there is that it's an adversarial system. That is what is protecting judiciary. Otherwise, it would be worse than bureaucracy. There are two sides which are visibly there. That is what is saving it. Otherwise, judicial judges will be doing worse than bureaucrats. That's my personal experience. Sir, the question, the idea to bring a Waqf commissioner instead of having the control of Waqf board is that, and the Waqf board also, the composition proposed by sir in the proposed bill of his related Babu Sahab is through the election of various in his district, 89 composition, means composition of each district from 89 categories, what he has told. And sir, that is a welcome step. That's what I'm saying. That is a welcome step. I am also for that only. Direct election by Muslim community. I have not seen his proposal, but in my proposal also, this is the basic concept. I really am for that. Because in democracy, you have to have the power with the people. Now, if the entire community wants a particular bad man, then we can't help it. There cannot be a better system than that. Coupled with that, we have kept exemplary punishments. Coupled with that, videography of every
I mean, we can do the best we have the wherewithal to. Sir, the That is commissioner what that is what Anwar Sahab, that is what I have communicated already, to connect 800 districts with the central, and so every Muslim beneficiary, every corner of the country, every person will be connected to the center, and from Gully to Delhi, in a short word, from Gully to Delhi. तो ये जो साहब ने जो 69 प्रोफेशनल्स की बात की है ना, that is what our first structure on which we have already proposed it to Pracha sahab, and that's what we call it a referendum. Referendum का मतलब यही है, शुरा, एक बंदे को 1 करोड़ को 20 करोड़ 20 करोड़ को 25 करोड़ से जोड़ करके सेंट्रल तक लाना, और सेंट्रल में जैसे हमारी बात पहले भी हो चुकी है कि एक सिंगल क़यादत हो और उसी क़यादत के अंदर में हम लोग चले. तो ये जो स्ट्रक्चर था, मैं ये चाहूंगा कि शफीक साहब ने जो पहले जो बात कही थी, that the work board should be an advisory board duly nominated through the structure called referendum. इसको हम referendum ही कहेंगे. और उसके बाद में administration should be under the commissionerate. ये मैं चाह रहा हूं कि एक बार जरा सा प्राचा साहब को वो खुद बता देंगे. सर, शफीक भाई. See, ideally, I have suggested कि Zaman ji share his proposal. You know, none of us has seen the Babu Khan ji's proposed bill that was shut down. So I think it would be genuine to have a look at it. None of us have seen that. We should study that, and my proposal should also be put in public domain. I have already put them on my website. Sorry, Yes. on my Twitter handle. Anwar Yes. Saab has, everybody has it. So let's Yes. have another meeting after a few days, after we Yes. study the proposal, and let's Yeah, get very बिल्कुल, much I think agreed. so. Let's Let us digest both proposal, go through it, and prior to the meeting, we can all put some comments in there on the chat line, and then inshallah have a meeting in few days. Exactly. Yeah, that will be much healthier and much better. That's the entire idea. The best suggestions have to be incorporated. Yes. Whoever yes. can think better, and then we all discuss and come out with a combined strategy. That's the Yes. idea. I mean, nobody has the last And word. that's how the spirit of Majlis-e-Shura works. You know, Majlis-e-Shura को corrupt किया गया है, वो अभी वो अलग टॉपिक है, अलग सब्जेक्ट है, लेकिन Majlis-e-Shura अगर सही तरीके से किया जाए तो it's one of the best system. Absolutely, because two minds are better than one. Yeah, बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. उससे बाजी. हाँ, ये शफीक जमा सर का जो प्रपोजल जो कमिश्नरेट का है, इट्स अपॉन 140 पेजेस, सो वी वांट it to be in a soft copy, so we will share it to Syed Anwar shortly. Yes. And everyone can go through it, and then और पराचा सर का तो हम already circulate करें, and we have read it, and let's decide it afterwards, inshallah ताला. ठीक है. Okay, Sam. ठीक है ना. I think so. That will give us an reformation agenda. So that will be easy to come to a concrete stage, and that is a good conception and the perception. It should be accepted. I am also doing this work of improving the 1995 Waqf Act section by section, improving that. So yes. that I will also place in public domain, so we can have best ideas on that. Section by section, I am doing it. Maybe this Shafiq Saab's proposal can also help me in that, and then we can have a consensus of whatever is the best way. Maybe ultimately a commissionerate system, all of us find it's better, but let's have a joint decision. बिल्कुल बहुत अच्छा. I am open to everything. My concern is transparency. My concern is accountability and exemplary punishment. आप बिल्कुल जैसा आपने कहा था ना, checks and balances होना चाहिए. कोई भी चीज है उसमें checks and balances होगा तो ही वो काम बनेगा. सिस्टम करप्ट नहीं होता, सिस्टम को करप्ट किया जाता है by various tools. समझे ना? जी. अच्छा, मेरे पास 2 लोगों ने हाथ उठाए. सर, कमिश्नरेट सिस्टम है ना, बहुत सारी कंट्रीज में काम कर रहा है.
आई एम अवेयर ऑफ दैट। जी जी जी, वो कर रहा है काम उस तरीके से, यूनिफाइड तरीके से, बट बात वही है कि चेक्स एंड बैलेंसेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। I am saying that अच्छा, I am not a doctor. there are two people, Shafiq bhai, let me bring them and then inshallah I'll call you back. Tabassum Baji and Muhammad Iqbal Abid. Who wants to come first? Hello? I have already put my point, sir. Okay, ठीक है ठीक है। हम तो soft मोहम्मद copy इकबाल, share कर देंगे मोहम्मद इसकी। इकबाल आबिद साहब प्लीज। मोहम्मद इकबाल, आपका ऑडियो ऑन नहीं है। कुछ कहना है मोहम्मद इकबाल भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसा कि अभी ये एक पॉइंट आया कि 95 पे भी वो काम कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो उसमें मेरा एक पॉइंट ये था कि क्या इररिवोकेबल और वर्बल ये दोनों चीज ऐड हो सकती है, क्योंकि वर्बल जो है उसका बहुत इम्पोर्टेंस है इस्लाम में। ठीक है, that is there, but I am grateful that you are giving, this is exactly what we want, कि हमारे दिमाग से कुछ छूट ना जाए। एक्चुअली ये पॉइंट तो हमने ले लिया ऑलरेडी, बट इन द डेफिनेशन ऑफ वक्फ, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड, दैट एवरीबडी शुड थिंक एंड गिव अस पॉइंट्स, बट ये तो इंशाल्लाह मैंने ले लिया है पॉइंट। थैंक यू वेरी मच इन एनी केस टू। ठीक है। हाँ, अच्छा सिमाब भाई, सिमाब अख्तर आपने हाथ रेज किया है, आइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जैसा कि उसमें हेडिंग में था ऑलरेडी कि कमिश्नरेट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो सॉल्यूशन है, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं मालूम, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा था कि कोई भी हमारा जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम लोग भी काम कर रहे हैं, चाहे हम लोग किसी से उम्मीद कर रहे हैं, तो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट सिस्टम हमारा बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए, भले लॉ की तरफ से हो या ना हो, कम्युनिटी की तरफ से इसको इम्प्लीमेंट कराना जरूरी है। ये मैं बोलना चाह रहा था। बहुत अच्छा पॉइंट है सिमाब, रियली आई अप्रिशिएट, आई एग्री। और ना ये सिर्फ डिस्कशन टॉपिक नहीं रहना चाहिए कि हमने डिस्कस किया, अपने ईगो को खुश किया कि हाँ कुछ हुआ है, नहीं, इसका बिल्कुल फीडबैक होना चाहिए, इसका बाकायदा अपडेट अपने को लेना चाहिए, और कहाँ पे हम किस जगह पे प्रोग्रेस हमने क्या किया इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये सारी चीजें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जस्ट उसके लिए सक्सेस स्टोरी भी हम लोगों को बहुत सारा दिखा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग भी जहाँ पे भी मुमकिन हो सकता है हम लोग अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। तो ये चाहते हैं कि ये ऊपर से हमारा एक मतलब फोर्सफुली हम लोगों को अब करने की जरूरत है, कम्युनिटी लेवल पे एटलीस्ट। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत अच्छा पॉइंट है। शफीक भाई आइए। सर मैं कुछ पॉइंट और कहना चाह रहा था, कह सकूं अगर इजाजत है तो? हाँ कहिएगा, कहिए। वो ये है कि जब ये बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, तो उसके एक हफ्ते के बाद जो है मैंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के सेक्रेटरी को ये लिखा था कि आप स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करें, और उसका एक पीजी पोर्टल है, उस पोर्टल के थ्रू सीपी ग्राम के थ्रू जो है मैंने वो डाला था, वो सेक्रेटरी के पास पहुंचा भी, फिर वो उसका 20 दिन के बाद मेरे पास जवाब भी आया था। और उसी टाइम मैंने जो है 20 एमपीज को जो है वो अप्रिसिएशन लिखा था जिन्होंने उसको अपोज किया था पार्लियामेंट में, तो उसमें से एक एमपी का रिप्लाई भी आया था। उसी टाइम मैंने जो है जेपीसी के 17 एमपीज को सेलेक्ट करके उनको ये कहा कि आप प्लीज जो है स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करें, तो उसमें से भी एक एमपी ने जवाब दिया था। तो ये स्टेप्स करने के बाद ये हुआ कि जब सेक्रेटरी ने मुझे जवाब दिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के कि आप ईमेल भेज सकते हैं, उसी के अगले दिन पब्लिक डोमेन में वो ईमेल जो है लोकसभा सेक्रेटरीट ने उसको जारी किया था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस तरह की जो भी चीजें हमें वहां तक पहुंचानी है मिनिस्ट्री तक, तो हम उस पोर्टल को यूज कर सकते हैं लोगों को अवेयरनेस के थ्रू। और दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर्स को, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट का माइनॉरिटी ऑफिसर है, उसको भी मैंने लिखा था कि भाई मैं आपके थ्रू प्रॉपर चैनल अपनी बात को उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड को पहुंचाना चाहता हूं,
ताकि वो ऑन रिकॉर्ड हो जाए। तो उससे मेरे पास जवाब आया माइनॉरिटी ऑफिसर का कि आप जेपीसी को भेजिए, तो मैंने जो है उसमें नॉट माइक सेटिस्फाइड को ऑप्शन डाल आवाज दिया, नहीं आ तो रही वो जरा माइक को पास रखिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, आवाज कट हाँ रही है तो थोड़ी थोड़ी। हाँ हाँ कट भी हाँ नहीं और उसमें बहुत आ रही है। हाँ उसमें ये हुआ कि नेक्स्ट स्टेप मैंने ये किया था कि डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर को जो है वो लिखा कि वक्फ के सिलसिले में मैं अपने ओपिनियन जो है थ्रू प्रॉपर चैनल जो है यूपी स्टेट गवर्नमेंट के वक्फ बोर्ड के पास पहुंचाना चाहता हूं, ताकि ये ऑन रिकॉर्ड जो है स्टेट लेवल पे भी हो जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो जाए। और वो मैंने ग्रीवेंस डाल दिया, उसका रिप्लाई भी मुझे आ गया। और उसके बाद 2-3 लोगों ने और डाला मेरे कहने पे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या हम लोग ये अवेयरनेस चला सकते हैं कि इस तरह की कोई भी पॉइंट्स जो लगे कि जरूरी है ऑन रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो पूरे इंडिया में इस चीज को वो किया जाए। ये कंसीडर किया जाएगा पॉइंट आपका मोहम्मद इकबाल, इंशाल्लाह। सलीम भाई आपने हाथ उठाया हुआ है, आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए। सलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये था कि मैं इसमें ये कह रहा था कि व्हाट इज द बाइंडिंग फैक्टर for the proportion of the wealth and the property the Christians have, and they're so well organized that they're able to harness the maximum benefit from their facilities. This is number one. Number two, and what is that where the Indian government can think of playing it up with the Waqf lands, whereas they hold more land than us, more properties than us, and they are unable to touch them. So I don't know whether this is contextual for this particular meeting. I don't know, but I just want to hear from you. This is it. That's my question. ठीक है। अच्छा, मैं शफीक भाई को कहूँगा कि वो शफीक भाई, Can you repeat, please? Yeah, no, I said was, what is the binding factor with the Christian community that they're able to harness the maximum benefit from their real estate and the institutions? Because where in comparison with our work, I'm sure they hold more property than us actually in wealth. And Can I the answer this Indian government. first? I would give a short reply to this, then Mr. Shafiq can. हाँ The जी reason is बोलिएगा। their leadership is less corrupt than Muslim leadership. Okay, That's please. all. Otherwise, there is corruption there also, but they are less corrupt than us. This is the simple answer. Now, do you want an official reply? हाँ Yeah, जी बोलिएगा शफीक भाई, बोलो। Salim Saab. Yeah, I need an official reply because you're in the middle of the. No, I will explain to you. You see, this is a. Do you know that Christian properties are governed by which act? Yes, I know. They are Yes. governed by Hindu Government Act only. Yeah. They are not governed. They don't have a. They are governed by Canon Law or Hindu Endowment Act. Hindu Endowment Act is for other religious charities also. Number one. Number two, this is a misunderstanding that Christian properties are well managed. I am talking of 1995-96 when I was Secretary Minority Welfare Government of Andra Pradesh. There were so many representation from Christians. He is eating this property, he is eating that property, he is doing this, he is doing. We want a law on Christian endowment, a separate law. So it is not because दूर के ढोल सुहाने होते हैं. Generally, people think that Christian properties are better managed than the other Waqf properties. Number two. Number three. Yes, some properties are better managed, but they are not. They are better managed because the individual properties are managed. They are not under the control of any board, any Waqf, any. So, if individual person he is doing hard work, he is honest, and he has a vision for compassion for the community, he is doing good work. That is why these schools and all that which you see as very prosperous, very well-run schools, they are individual efforts, and it has nothing to do with the overall Christian properties, canon law properties. So there is lot of mismanagement. There is lot of sale in Christian properties also, but the individual success stories which you are seeing, they are individual efforts.
थैंक यू। Do they have? थैंक यू शफीक भाई। मैं अभी सम अप करना चाहता हूँ कि देखिएगा शफीक भाई का जो प्रपोजल है और डॉक्टर पिराचा का, ये हम सभी को मिलना चाहिए। एंड लेट अस गो थ्रू दैट एंड गिव से 3 or 4 days time, and then we reconvene this meeting again and see a way forward on this. Just one point I want to clarify. This is not my proposal. This is नहीं, a आपका प्रपोजल नहीं है। जो भी था, जो भी डॉक्यूमेंट्स है prepared in 1997 by हाँ जी government. जी, ठीक है वो एटलीस्ट वी हैव एक चीज डॉक्टर साहब, आई जस्ट पुट वन इन सीक्वेंस टू द पर्सन, आई डोंट नो हिज नेम, हु हैज प्रपोज्ड like to approach the government and the authorities or the like the minority section. So Mr. Abid, तो उनका वो सजेशन बहुत बेहतर है, लेकिन इंडिविजुअली जाने से बेहतर है कि मैं पहले दिन से एक ही बात कर रहा हूँ कि हम लोग इसको एक क्लस्टर में ले जाए, एक ग्रुप में ले जाए, और वो ग्रुप जो है वो हमारा कोई उसको जो एक डेलीगेटरी अगर पावर हो तो एक की आवाज और 1000 की आवाज में फर्क होता है। तो लेट अस गो थ्रू एसोसिएशन, नॉट एन इंडिविजुअल का तो ठीक है, अब उनको जवाब मिल गया, एक बार मिल गया, 2 बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, बार बार कभी नहीं मिलेगा। तो लेट अस गो इन क्लस्टर ऑफ लाइक दी नंबर्स, दैट इज व्हाट आई फील। सो नहीं, बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है अल्टीमेटली इसको वही एक शेप देना पड़ेगी हमें, तो ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल, जहाँ पे हम सभी को लाके एक साथ एकजुट होके, ये जहाँ से भी जो सक्सेस स्टोरी है इनको एक साथ जुट करके हम नेशनल लेवल पे काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे एसोसिएशन 1 लाख होने दीजिए, लेकिन जो सेंटर में जो हमारा जो प्राचा साहब का जो चल रहा है मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम वो उनको दे दे रिप्रेजेंटेशन और लेट हिम लाइक टेक इट फॉरवर्ड। तो उसमें एक मॉनिटराइजेशन मिलेगा दिल्ली में। अगर हम इंडिविजुअली जाएंगे ना, हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग ऑन फ्लोर ऑल्सो। I am collecting individual like the associations, including like गैरों से भी मैं ले रहा हूँ, उनके एसोसिएशन से भी ले रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए हम और मैं एक ही नाम से ले रहा हूँ, एसोसिएशन का नाम कुछ भी रहने दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो है वो देना है प्राचा साहब के हवाले कि भाई ये हमारी कौम की आवाज है, ये हमारी मिल्लत की आवाज है, ये हमारे एसोसिएशन की आवाज है। So that the cluster will be accommodated at one place under one umbrella. It will be easy for us for monetization and to lead the matter. इसमें दूसरे माइनॉरिटी सब एक साथ आ जाएंगे। Exactly, because इधर एक और रीजन है, प्राचा साहब has already initiated multiple objects for the common factors of all the consolidated communities who's already into the minority, and they agreed. So the grievance has been accommodated under one place. So let us move with that. हाँ, रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, आई एग्री विद एग्जैक्टली। हाँ, ठीक है। तो आज की मीटिंग मेरा ख्याल है हम ये करते हैं, अभी समाप्त करते हैं, और इंशाल्लाह अनवर साहब, सर मुझे ये बोलना था प्रादेश सर को। सर मैंने एक सजेशन दिया था सर कि नेशनल वक्फ एकेडमी जो है, जो राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में रिकमेंडेशन में लिखा है, वो सर विदाउट इंजन, अभी जो होता है सीईओ जो अपॉइंट होता है सर, वो परमानेंट नहीं होता है, हमेशा वो एडिशनल चार्ज वगैरह का होता था, इसलिए वो परमानेंट का रिकमेंडेशन था। अभी तो सर एक नेशनल वक्फ एकेडमी क्लास 1 ऑफिसर के थ्रू उसका सिलेक्शन का क्याम किया जाए। अगर हम वक्फ की बात करते हैं, वक्फ एक्ट की बात करते हैं, आज हमारे पास प्रपोजल आया है वक्फ कमिश्नरेट का, तो हमें वक्फ कमिश्नरेट को अगर हम सोचेंगे तो भी हमको वी रिक्वायर दैट एंजल टू कैरी ऑन, हु हैज नॉलेज ऑफ इस्लामिक लॉ, हु हैज नॉलेज ऑफ उर्दू एंड फारसी। सर इफ यू परमिट मी, कैन यू प्लीज ऐड वन मोर पॉइंट? हाँ बोलिए जल्दी से इकबाल भाई। We want to conclude the meeting now. 30 सेकंड होनी चाहिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आईआईटी दिल्ली की जो है रिपोर्ट है 2021 की, जिसमें उन्होंने कहा कि 95 का जो एक्ट है वो बहुत अच्छा एक्ट है, लेकिन उस एक्ट पे एग्जीक्यूशन सही से नहीं हुआ, और उसके लिए उन्होंने शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान दोनों दिया हुआ है। कई पेजेस में वो रिपोर्ट है, यू कैन रिफर दैट रिपोर्ट। दैट्स माय पॉइंट, फिनिश। ठीक है, शेयर विद मी, आई विल शेयर विद एवरीबॉडी।
Mohammed bhai Pracha, please. Yes, thank you very much. I agree. Or I have initiated talks with the scheduled caste community. They have certain demands, scheduled tribes. They have certain demands which are most important to them. Like, for example, reservation. In jobs, there is a backlog thing, and there is a SC/ST sub-plan, which gives them reservation in every state's budget in proportion to their population. So that is not been implemented. So we will formulate about 5-6 points, which will be our demand on behalf of scheduled caste, scheduled tribe, Muslim, Sikh, Christian, Baudd. That constitutes 36% of the country's population. That way, the RSS factor, which they always do, will not be able to make it a Muslim issue and try to generate public opinion in their favor. So it will be a joint movement of scheduled caste, scheduled tribe, Muslim, Sikh, Christian, Baudd. That will, I think, will neutralize their attempts to that's a very healthy the way. That's a very healthy way of going forward. Definitely. Yeah. Wholeheartedly. Common I agree minimum with program this. of 5 points. Yes. Shafiq bhai, I give you the last word because you are our chief guest today. So please sum it up. No. As I already said, that these proposals were prepared in 1997. A lot of water has flown down the Ganges, so we have to improve it and all that. And if Mehmood has done some good work and all that, we can definitely look into that also. And let us work as a one team in a unity, inshallah. और जहाँ से भी अच्छी बातें आती है उसको लेके हम चले आगे, inshallah. Best and most practicable. Yes. बहुत अच्छे. Jazakallah for your time and Jazakallah everyone. I really appreciate सभी का बहुत बहुत मशकूर और ममनून हो कि अपना कीमती वक्त देके आप आए. तो इंशाल्लाह सैयद साहब, सैयद अनवर. Yes sir. हाँ, तो डिसाइड कीजिएगा अभी कब मीटिंग अपने को रिकन्वीन करनी है. यस सर, ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे सर सबसे. ठीक है. नेक्स्ट मीटिंग कब रखना है और इंशाल्लाह फिर वी विल कम्युनिकेट. ठीक है ना. ओके सर. जज़ाकुमुल्लाह खैर. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया सब लोग का. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. Thank you all. Thank you.